Assalamu alaikum guys, this is your host Shayan Hussain and welcome back to another new episode of Student Lounge. एक ऐसा शो जहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं अपनी राय का इजहार करते हैं और अपने बारे में बताते हैं. बेसिकली हमारे जो करंट स्टूडेंट्स हैं और रिसेंट ग्रेजुएट और बेसिकली जो मास्टर्स और पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं. सो टुडे विद अस इज़ मरियम फातिमा शाह, सैयदा मरियम फातिमा शाह. शी इज़ एन एमबीए स्टूडेंट और बैचलर्स भी उन्होंने यहीं से ही किया है. नाउ शी इज़ डूइंग एमबीए, जॉब भी कर रही हैं. सो हाउ आर यू मरियम? I'm good. How are you? आई एम गुड टू. आज थोड़ी सी नर्वस हैं तो कमेंट्स पे हल्का हाथ रखिएगा थोड़ा सा. ओके. सो मेरा पहला सवाल हर स्टूडेंट से या हर गेस्ट से पहला सवाल यही होता है कि हु इज़ मरियम, व्हाई इज़ मरियम एंड व्हाट इज़ I मरियम think this question is like school से लेके till end it's be like intro about the first in every class it's Yes. like a necessary thing. So let me start. My name is Mariam and I'm currently doing my MBA from here. Back in like 2023 I completed my bachelor's in marketing. And then I was like कि थोड़ा और आगे पढ़ लेते हैं तो I enrolled in MBA. Apart from that, I'm working as a media and strategy planner at Starcom Worldwide. ओके. So yeah, that's like my corporate and my professional introduction. ठीक है. तो ये तो हो गया हु इज़ मरियम. तो व्हाई इज़ मरियम, मकसद क्या है मरियम का? Just to achieve things and survive in the world where it's like I know I can do everything by myself without anyone's help or guidance. ठीक है. तो you don't want to be dependent on somebody. Yeah. This is what you're saying. Yes. Okay. And what is Mariam? I think Mariam is someone who just wants to seek good things in her life, ठीक even है. if it's like कि छोटी चीजें matters a lot and I put all my efforts in it. ठीक है. Like apart from like everything, just like my hobbies. Okay. I love reading. I love writing. I do write poetry sometimes Okay. too. आज सुनानी पड़ेगी फिर अगर आप कह दिया No, मेंशन कर it's दिया like a तो. very, it's like very low key thing for me. Na, I do painting as well. ठीक So है. it's like just managing everything at my best I can. So it's like just making myself happy from little things and making my parents and like people around me happy. ठीक from है. it. So if I ask you Mariam के how was Mariam in school? मतलब how was Mariam as a kid? Mariam, as a kid, Yes. well, it's like I was a head girl in my school. Okay. So you can now just relate to it. I was a The word nerd. you said earlier, nerd, right? Yeah. Okay. It's like the first bencher whom like every teacher likes, but ठीक है. other students don't like me. ठीक है. So yeah, that school maybe I used to sit in first class and like I with my best friends and it's like it's almost still like 12 to 13 years I have my school friends with me Okay. still. So it's like with them just bunking classes, Okay. studying at the same Being a time. head girl and bunking classes. Yeah. Okay. It was like कि दोस्त है ना तो चलो कर लेते हैं बट कुछ ना कुछ तो इस तरीके से ही होता था Okay. बट स्टिल आई वाज अ गुड स्टूडेंट. नहीं एज अ पर्सन हाउ इफ यू अगर इफ यू लुक बैक एंड आप माशाल्लाह तो काफ़ी चेंज आया होगा. लेकिन इफ यू एज अ किड वर यू इमोशनल किड, वर यू वर रेबल किड, किस तरह का how were you? आई गेस आई वाज नॉट इमोशनल बट वो जो शरारती बच्चा भी होता है ना Okay. वो वाली चीज़. इट वाज लाइक इनर माई सेल्फ वाज ऑल लाइक शरारतें करना ये वो बट देन इफ यू सी योर सराउंडिंग एंड लाइक सिबलिंग्स एंड ऑल तो उस कंपटीशन की वजह से आई वाज लाइक नहीं मुझे भी पढ़ना है मुझे ठीक भी इस है, तरीके से okay. करना है. तो कोई शरारत याद है, कोई बड़ी सी शरारत की हो? I logged like my friend in the classroom. जब असेंबली होती थी आई यूज टू चेक लाइक ऑल द कॉरिडोर्स एंड ऑल ना तो उनको मैं बंद कर दी थी क्योंकि असेंबली जो होती थी वो बहुत लंबी लाइक 30-40 मिनट्स और उसमें बच्चे बेहोश हो जाते थे तो मैं उनको ऊपर बंद कर दी थी एंड आई वाज लाइक टीचर को नहीं पूरा फ्लोर खाली एंड नोबडी इज एंड लाइक देन वी यूज्ड टू चिल एंड देन उसके बाद आते थे. तो इट्स लाइक लिटिल थिंग्स हेल्पिंग माय फ्रेंड्स अराउंड कि नेल्स कट नहीं हुए ये नहीं हुआ है चलो तुम लोग साइड हो जाओ एंड ऑल. So it's like a grouping with my friends and ठीक है. just enjoying school life. School life is Okay. best. Like I can say that. वो चीज़ वापस नहीं आ सकती. ठीक है. तो मरियम ने जब स्कूल भी कर लिया और कॉलेज भी कर लिया तो व्हाई डिड शी डिसाइडेड टू कम टू IoBM? And one more thing, I did my schooling in like medical. I did ठीक my है. O levels in bio. So since my parents want me to become a doctor Okay. and all, एक ख्वाहिश ठीक होती है. है. So then I was like, I don't want to do it now because ठीक है. I was not like good in maths. I ठीक was है. not good in Urdu. मेरी उर्दू बहुत बुरी है. ठीक It's like है. मैं उसे पढ़ सकती हूँ लिखने में आता है तो I'm just like I cannot do it anymore. ठीक है. Then I was like I have to do something like not in medical but like I have to explore other field as well.
So then I was like, hey, let's do business and इस type ठीक है वाली चीज़ें, because my mind was like कि कुछ अच्छा करना है, कुछ innovative करना है, let's work at my own and इस तरीके का. Then I was like, okay, let's start it. So I just did my inter in commerce and then I stepped into IoBM ठीक है because it was like second university currently in Pakistan on the top. So I was like, I have to pursue my bachelor's from there. So I just started ठीक my है. journey from here. Your parents wanted you to do MBBS, basically doctor. Yeah. So why? What's the reason behind it? कभी सोचा, कभी पूछा उनसे? Since I'm like the only daughter in my house, so they were like, they expect a lot from me. So that's why they were like, ये डॉक्टर बनो, खानदान में कोई डॉक्टर नहीं है, Okay. इस तरीके वाली चीज़ें. Then I was like, everybody has a different thing in which they can, you know, use their expertise. So I was like, just trust in me. I'll make you proud in that too, ठीक what है. I'm doing. So yeah, like one best thing I would say is like they support me in every decision I do. Okay. Like even if I do a mistake, पेपर में फेल भी हो गई, कुछ भी हो गई, they are like, it's okay, you're gonna do it later on, just we ठीक है. trust you. मेरा नेक्स्ट सवाल यही आ रहा था कि were they very supportive of, या कैसे मनाया उनको for the business, because this is entirely different, right, from Yeah. it's totally opposite basically. तो उनको मनाया कैसे कि मैंने BBA करना है? I can say it was a very like struggling thing for me, but since my father was always supporting me, my mother was like, even my mother my mother is a banker. Okay. So I was like, Mama, आप तो ये करती हैं, तो let me also do something ठीक like है. that. So, but my father was like, you can do whatever you want to. But my mother was like, डॉक्टर बनो, डॉक्टर देखो कैसे होते हैं, लड़कियां तो डॉक्टर ही बनती है. It was a stereotype basically. ठीक है. So I was like, you know, I have to do something like in the business field and all. So then I like jumped into that, and my father ठीक है. was like, I just trust you, do whatever you want. I'm always there for you. So it okay. was like something very great. क्योंकि मुझे इससे याद आता है क्योंकि when I was यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने से पहले तो माय फादर यूज्ड टू शो मी डिफरेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस के यहाँ से करोगे तो ये हो जाएगा, यहाँ से करोगे तो ये हो जाएगा, ये वाली से मतलब ही वाज लाइक पुटिंग एन आइडिया इन माय हेड, बट आई वाज लाइक मेरी मैथ्स बहुत बुरी है, मैं इंजीनियर बन गया तो बहुत बुरा योर बनूंगा. करियर शुरू से ही कि अगर ये करना है तो इसमें ये है, ये करना है तो ये है, तो इट्स लाइक. But then I was like, I know what I'm supposed to do, and I'm like very happy. The decision I made like in past like 8 years, but if I now consider myself, so I was like very happy. The decisions I always made, it's like a thought process I do before everything. Then it's like something nice in there, like its outcome is always nice. So I'm like very happy on it. Whatever decision I make, I'm just sticked into it. ठीक है. तो मरियम IoBM आ जाती है और मरियम पहले सेमेस्टर में है, तो हाउ वाज एक्सपीरियंस गोइंग, या कभी ये हुआ कि मैं ये कहाँ आ गई, मैंने BPA कर तो लिया है, ये होगा नहीं होगा या क्या है, या इजी लगा या मुश्किल लगा, ये क्या, व्हाट्स वाज द जर्नी? आई डोंट नो. इवन जब मैं पहले दिन आई थी, आई रिमेंबर मेरे साथ इतना वियर्ड चीज़ हुई थी, मेरी स्लीपर टूट गई थी यूनिवर्सिटी में, एंड आई एम लाइक अभी सुबह एंटर हुई हूँ, अब मैं क्या करूँ. एंड कोरंगी वाले रोड पे कितनी ट्रैफिक होती है. आई जस्ट वेंट इनटू, माय फादर ड्रॉप्ड मी यूनिवर्सिटी एंड आई वाज लाइक, आई कांट इवन कॉल हिम बैक कि आप मुझे ज़रा वापस लेने आ जाए. एंड ऑल देन आई वाज लाइक, इट्स ओके, आई जस्ट मेड फ्रेंड्स. तो फिर दे हेल्प बी लाइक, चलो टक शॉप चलता है, वहाँ से विल गेट समथिंग टू रिपेयर योर स्लीपर एंड ऑल. सो आई जस्ट रिपेयर इट फ्रॉम लाइक UHU. ओके. एंड देन वाज लाइक, ठीक है चलो स्टार्ट तो बहुत ही अच्छा हो गया है, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस टिल एंड. इट्स लाइक कि क्लास नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिल रहा. आई वेंट एंड सिट इन अदर क्लास, गलत क्लास में बैठ गई, पूरी क्लास सुकून से ली. एंड जब अटेंडेंस का टाइम आया तो मैंने बोला, सर मेरा नाम नहीं है. तो ही वाज लाइक, अभी STD बताया. तो कह रहे, ये आपका ये सेक्शन नहीं है, आपका, आई रिमेंबर माई सेक्शन वॉज लाइक U or H, something like that. So वो है. Then I went to that class and all. So it was like meeting new people. थोड़ी सी anxiety and nervousness तो होती है. But then it's like they help you to shape your social path and groom your personality. ठीक है. तो वो चीज़ I can say like the way I am like very outspoken now, confident, that came from like interaction with people. Like the university actually grooms you a lot, your personality, because that it's so like true. you start your journey from there, you know. So that was the thing I can say. एंड शुरू में इट वाज लाइक कि सोसाइटीज़ ज्वाइन करनी थी. तो मुझे वैसे भी शौक होता था हर चीज़ में आगे रहने का. स्कूल में भी ड्रामास, प्लेज एंड एवरीथिंग, सिंस आई टोल्ड यू हेड गर्ल बन गई. कॉलेज में भी आई वाज CR. तो इधर आई वाज लाइक इधर भी कुछ मुझे ऐसा करना है इन विच आई कैन लीड. ठीक है. देन आई जॉइंड सोसाइटी. आई रिमेंबर आई जॉइंड कैनवस एंड आई जॉइंड EPS. सो दीज वर द 2 societies आई जॉइंड इन माई फर्स्ट ईयर.
So उसका भी अच्छा था. Ken West I just left it because in EPS there was one society policy. So I was just stuck into EPS and then it was like very fun. मज़ा आता था. Events हो रहे हैं, concerts करवा रहे हैं and like staying in university. I was director at creatives. Okay. So just using my mind a lot for the creativity. Nah, Like कि exactly. ये करना है, ये करना है. So it was like fun. A lot of fun. I enjoyed a lot. I can say I enjoyed my uni a lot. Even the sports event जो Vanquishers करवाती थी, उसमें भी I used to take part and everything. It's like Mariam has to be everywhere. Whatever is happening, I have to be there. So that was the thing I can say. Like I'm always like I have to take initiatives for doing everything. आपने जैसे भी कहा कि मैं यूनिवर्सिटी आई और मेरी सैंडल या वो जब टूट गए, राइट, देन यू फाउंड फ्रेंड्स इन अ क्लास और मे बी, तो यू वेरी इजी अप्रोचेबल, ये क्या उसमें मतलब यू आई जैसे फॉर एग्जाम्पल माई एग्जाम्पल इज आई एम वेरी पिकी अबाउट इट with my friends and all. I cannot become friends with everybody. I know everybody, but I cannot become friends with everybody. So what about you? Is it difficult कि नहीं ये 4-5 दोस्त हैं बस मेरे लिए काफ़ी हैं, या you are like with everyone and all? I have a lot of friends. Okay. नहीं, that's not a bad thing. It's like Don't say like that it's a very bad thing. No, it's not a bad thing, but I'm telling you like I'm an extrovert. Okay. It's like कि बात करनी है सबसे and helping people around. Even जो एक क्लास में बच्चा होता है ना जो खुद पढ़ता है and then सब बच्चों को पढ़ाता है. Okay. So I was like that, very I can say helping to my friends and all. मैं खुद पढ़ती थी and people were like बस ये पढ़ लेगी ना, ये हमें भी पढ़ा देगी. तो ये था कि I used to help a lot and with time तो फिर आपको यूनिवर्सिटी लाइफ में आपको स्नेक्स भी मिलते हैं. Okay. तो ये सारी चीज़ें भी Let's talk about that. It's like Don't tell me names, but what exactly happened? क्या यार, I think ये रहने देते हैं. It's like things happen in your life, but it's like you every phase of life आप मिलते हैं ना लोगों से, तो आप अच्छे लोग से भी मिलते हैं. ठीक है. बुरे से भी. The lesson learned होते हैं ये, और ये और मैं एक बात बताऊँ, ये सिर्फ आपके साथ नहीं है, ये with Everybody, it happens with everyone. सबके साथ होता है ये. Even I remember like I used to do assignments and all like everything of my friends, and जब मेरी बारी आई थी कि चलो ये assignment मेरा कर दो, since I'm not able to do that, नहीं किया था assignment मेरा. I was like क्या है ठीक ये. है. उसके बाद से I was like no, you have to just focus on your things and just आप अपना पढ़ो ठीक है. and just help people, like few people, not everyone. तो उस प्रोसेस के अंदर पता चला कि who are your true friends basically. I have my first semester friends अभी भी. तो like very few friends last till end. एक वो तो ना जो सैक में एक बड़ा ग्रुप बना होता है, सिंगिंग, गिटार बजा रहे, ये कर रहे, and वो shrink होते होते just left 3 people or 2 people in it. So it's like I'm happy with them. तो शुरू से लेके अभी तक now I have like 2 or 3 people. Oh, that's good. So मरियम आ जाती है फर्स्ट सेमेस्टर में, दोस्त वगैरह बन गए, सोसाइटीज़ भी ज्वाइन कर ली, 1 साल गुजर गया एंड एवरीथिंग. अब मरियम आ जाती है 4th में, तो अपने अंदर डिफरेंस क्या देखा मरियम ने कि फर्स्ट सेमेस्टर की मरियम ने और 4th सेमेस्टर की में 2 साल गुजर गए. फर्स्ट सेमेस्टर में आई रिमेम्बर, सेकंड सेमेस्टर में तो कोविड आ गया था. हाँ, ओके. तो 2 साल में मेरे था कि यार आई हैव टू गो यूनिवर्सिटी, आई हैव टू इंटरैक्ट, आई हैव टू स्टडी. सो वो चीज़ तो फिर मेरी रह ही गई थी. देन आई जस्ट जॉइन बैक, सो आई वाज लाइक ऑल इनटू इट कि बस अब आ गई हूँ, अब लाइक आई हैव टू एंजॉय मोर. एंड देन हमारे इवेंट्स वगैरह भी स्टार्ट हो गए थे यूनिवर्सिटी में होना. सो जस्ट like getting sponsors, events की तैयारी and ये सारी चीज़ें थी. So like all into that. And I remember like 7th semester में फिर होता है ना कि career की tension, अब क्या करना है. ठीक है. तो like my teachers always used to say, like there are few teachers like they helped me a lot. So I remember my sir used to say that there are people who make opportunity or they wait for the opportunity. हाँ, सही, So that's then so true. I was like, I don't have to wait. I have to make opportunities for myself. So that's why like I have started internship वगैरह and all ये सारी journey की. And then I ended up becoming a corporate girly who is struggling to now do her MBA. तो I hope वो भी complete हो जाएगा. ठीक है. तो when did you decided कि अब मुझे internship करनी चाहिए, या अब मुझे I look for a job, या I look for प्रॉपर कोई ऐसा एक्सपीरियंस करना चाहिए मुझे? There are like 2 things. एक तो आपको घर से प्रेशर होता है. मेरे घर से मुझे कोई प्रेशर ही नहीं था कि तुम इंटर्नशिप कर लो, तुम जॉब कर लो, तुम ये कर लो. They are like बस तुम पढ़ लो, तुम्हें जितना पढ़ना है, जहाँ तक पढ़ना तुम पढ़ लो. बट पीयर प्रेशर. तो मैं जब भी लिंक्डइन खोलती थी, हैव ज्वाइन HBL पे इंटर्नशिप हो रही है, यहाँ पे लाइक द FMCGs एंड एवरीथिंग. सो आई वाज लाइक मरियम यार तुम्हें भी करनी चाहिए. तो आई वेटेड अ लॉट. आई रिमेम्बर मुझे जस्ट EM इंटर्नशिप करनी थी, नहीं मिली थी.
And then फिर gradually I was like छोटी सी भी मिल रही है तो like start it, and I did my internship in sales. So then I was like okay, then sales हो गया, फिर इस तरह से I started to just कि छोटी सी internship I कर लो, सही and है. then MT programs and all. Then I changed my field, sales से media planning and इस तरफ. What was the reason you changed it? My like that sales was related to B2B. And ठीक उसमें है. यही है कि आप खुद से कर लो, manage everything by your end, and then just relax. Nobody's ask questions to you ना. But then I was like कि at least कुछ challenging चाहिए मुझे करने के लिए life में. So then I was like we should be like changing my I should change my field. I studied courses like that, media planning वगैरह इस तरीके का, तो वो काफ़ी interesting था. ठीक है. My interest developed in that, तो मैंने कहा change करके देख लेते हैं field. So then I just started like as a MT, and I'm just enjoying my work. That's the one thing that I really like about myself. I never do a thing that I don't enjoy. Okay. मतलब मुझे नहीं अच्छी लगेगी, I'll be like I cannot. But if I do something, I'll put my 100% into it, and I'll be like I'm very happy. People are like थक गए, frustrated, what is this and all. ठीक But है. even in like studying, मैं एक हफ्ते दो हफ्ते से पहले पेपर का पढ़ना शुरू कर देती हूँ. एंड फिर मुझे होता है कि फिर भी टेंशन होती है क्या मैंने ये नहीं पढ़ा था, ये पढ़ लिया लेकिन ये वो, एंड फिर भी पेपर में जब तक मैं एक्स्ट्रा शीट नहीं लूँ आई एम नॉट सेटिस्फाइड. मतलब मुझे पता नहीं ऐसा लगता है कि अगर आप एक्स्ट्रा शीट ले दो तो टीचर को लगेगा यार मेहनत तो की है ना कुछ तो लिखा ही है. तो ये चीज़ थी कि पहले से प्लान करूँ चीज़ें एंड देन करूँ. बट अब तो ग्रेजुअली है कि रात में पेपर से एक रात पहले पढ़ना मिलता है. Okay. पहले तो आई यूज्ड टू स्टडी बिफोर 2 weeks of the exam. So how are you managing your routine? Like for example, you're saying you working 5 days a week. Yeah. और फिर MBA. चलें वो तो सही है, दिन अलग अलग हैं लेकिन उसके असाइनमेंट्स की चीज़ें हैं, तो वो कैसे मैनेज कर रहे हो? It's like ongoing struggle for ठीक me, है. but I'm just managing it. Like when I come back from work, I just do then, and like we have work from home on Wednesdays. Okay. So I just consider that as a blessing. तो उसमें मैं अपने assignments वगैरह कर लेती हूँ and ये सारी चीज़ें कर लेती हूँ. And courses especially मैं लेती हूँ evening के या second slot के, so that सुबह उठ के process करूँ. Sometimes I'm like मैं रोज़ सुबह उठती हूँ मम्मी पापा मैं रोज़ सुबह उठती हूँ. So that is something like I wake up every day daily like 7 in the morning, 8 in the morning. But so I can say now I'm a morning person. ठीक है. Even छुट्टी होगी like there is like in summers I had no university on weekend, but still I used to wake up early like around 9 or 10. Okay. So I'm like okay, gradually what's happening with me, but I was like it's okay. Adult life. Yeah, You- adulthood. You don't like it? I think I like it. Because there are benefits and perks of that too, so you can be like not like you not say that "Okay, I don't like it." It's like struggles are always worth it. So you have studied a number of courses here. Yeah. और अब जो माशाल्लाह सब काम कर रही हो, तो इफ़ आई आस्क यू कि 3 टीचर्स या कोई भी ऐसे फेवरेट टीचर्स की उनमें से कौन सी ऐसी वैल्यू ऐसी ट्रेड तुम लेके अब जो तुम काम कर रही हो उसमें तुम यूज़ करती हो, तुमको याद आता अच्छा सर ने ये पढ़ाया था, नाउ आई कैन सी कि वो दिख रहा है इसके अंदर मुझे, तो क्या क्या हो सकते हैं? Like I can name a lot of teacher here like who helps a lot in selecting me in the courses and everything. When I'll talk about the electives that I took, so उसमें मैम अस्मा रहमान, she is like so helping hand over there. I remember I was struggling selecting my majors कि BBA तो उठा लिया but HR है, supply chain है, marketing है. So she properly counseled me. Okay. कि आप ये course is for like this, the brand management है इस तरह से, there are different courses that you can take. So that was like कि teachers help a lot in counseling students, like showing their pathway, because है. they know you आप एक course पढ़ते हो 2 course पढ़ते हो, she get it how like the student is, what she can do or what she cannot do, so they guide you like in that way. ठीक है. Even there was Sir Khurram Iqbal in my first semester. I remember मतलब मेरी मैथ्स इतनी बुरी थी, मैं बोलती थी सर मुझसे नहीं होगा, मैं F दिख रहा है मुझे अपना, but he was like you can do that. Even in breaks I used to ask sir are you free, like can you please explain me this question. He never used to say no, he used to help. And Sir Rehan Muzammil, Sir Sardar Nawaz, so there are like so many teachers who actually guide you, not about like just study पढ़ा दिया courses ये वो, but like in your other like in your mental well-being, in your like grooming personality and the सारी चीज़ों में भी helps you a lot. Like I did my entrepreneurship का course, like
entrepreneurship का course from it. In that I was used to like start छोटा सा भी कोई business Okay. and just to run that. So वो जो skill set है, setting everything in that way, how to deal like putting things on page, किस तरह से sell कर रहे हो, creative ideas for do your business and all. So that comes in that. कि this is a great thing I can say that कि आप लोग help कर रहे हो ना कि you have if you have to work or you have to do your business, so just start it from there. So that in the end you know how to just manage things from there and इस तरीके से. So I can say that like it's a great thing that eventually help you. And जैसे आप groups बना रहे होते हो, like there is a one leader and there are some free riders in the group. तो वो चीज़ भी मुझे लगता है कि help कर ही रही होती है. जब आपको पता है यार अकेले ही सब काम करना है and आगे भी आपको अकेले ही करना है, तो that's another thing that like you learn how to deal with people. कि किस तरह से you interact with different people, so you should know how to deal with it. ठीक है. पेशेंस डेवलप वाली चीज़ आई कैन से वो भी मुझे अच्छी खासी डेवलप्ड हो गई थी सारे कोर्सेज में रह के. ठीक है. मे बी इट्स बिकॉज आई वॉज वेरी पर्टिकुलर कि आई हैव अ मेजर OCD. आई वांट थिंग्स टू बी डन इन दैट वे. मतलब इसको इस तरीके अगर कर भी देना कान भी लाइक नहीं ये सही नहीं हुआ, इसको इस तरीके से करो वापस. लाइक ऐसा तो नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल ग्रुप में आप काम करते हो, वो काम करके उन्होंने दिया, आपने कहा नहीं नहीं ये ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे होगा. yes, I used to do that a lot. फिर मैं पूरा काम खुद ही करती थी. But then I was like कि at least others are also like putting their कुछ ना कुछ effort in that ना, so I have to be like cooperative. ठीक है. तो teamwork, cooperation. अच्छा, you said कुछ ना कुछ effort. You did not say बहुत सारा effort. Okay, I can say बहुत सारी effort, but वो जो teamwork, cooperation, patience, तो वो वाली चीज़ इससे से आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो गई कि अगर आप कोई कुछ गलत भी कर रहे होते हैं क्या, तो लाइक इट्स ओके, ठीक है, डू दैट, इस तरीके से हो जाएगा या क्या. एंड इन MBA तो आई एम लाइक बस जैसे हो रहे होने दो, बस मुझे कोर्स में ना मतलब मिनिमम B चाहिए, इससे कम नहीं चाहिए. सही है. तो ये भी है. मेरी बैचलर्स में पहली ट्रांसक्रिप्ट में C आया था पहला, एंड आई वाज लाइक यार ये क्या हो गया, ये क्या है ये. And now you're working, you know that these things Yes. doesn't matter. I cried. मैं रो रही थी. मैंने पहली दफ़ा ज़िंदगी में C आया ट्रांसक्रिप्ट पे ये वो. तो पापा इज़ लाइक कि कोई बात नहीं, एटलीस्ट इट्स लाइक यू डिड अ थिंग एंड यू आर नॉट द ओनली वन, बाकी बच्चों का भी आया है C. तो मैंने कहा बाकियों से कंपेयर नहीं करें, बट इट्स ओके. अब नहीं आया तो आई कैन नॉट डू एनीथिंग इन दैट. Okay. अच्छा, you told me that you were director creatives. Yeah. EPS में. Yes. So did you channelize all your creativity? जो याद है you were telling me about your paintings, और एक और चीज़ आपने क्या कहा था? Writing, poetry. हाँ, तो वो channelize किया यहाँ पे, वो तो वो creative side of it. Yes. तो क्या क्या किया उसके अंदर basically? आप जब एंटर होते हैं सैक से जंक्शन जाते हैं, पूरा सैक डेकोरेट हुआ हुआ है, एंड बाहर पूरा स्टूडेंट सेंटर एंड Yes. वो सारी चीज़ें ना, ये बहुत दिमाग इस्तेमाल किया, इसको इस तरह से क्रिएटिव कर सकते हैं, इधर ये लगा सकते हैं, वो कर सकते हैं. ठीक है. इट्स लाइक आई यूटिलाइज ऑल माई एक्सपर्टीज. सो इट्स लाइक दिस आइडिया इज कमिंग वन अनदर. सो इट वाज समथिंग आई एंजॉयड अ लॉट. तो जो क्रिएटिविटी एंड ये सारी चीज़ें हैं ना, दैट आर लाइक आई यूज्ड अ लॉट इन दिस, एंड विद टाइम वो साथ साथ इम्प्रूव भी होती गई. ठीक है. आई स्टिल फील लाइक that's something I really miss about university, the society, the people you just enjoy, and you do like hang out with them. So that is something I can say. तो किया क्या इवेंट्स, क्या क्या किए, क्या क्या चीज़ें करवाई, क्या? जश्न बहारा. ठीक है. We did जिसमें and freshers night we ठीक है. did when I was in EPS. So these are the things we did, like फरहान सहीद अली ज़फ़र का जो कॉन्सर्ट हुआ था, ठीक है. अब्दुल हनान वाला जो कॉन्सर्ट हुआ था, मुस्तफ़ा ज़ाहिद. So these are the things I can say like we did it as a society. Okay. That is something I really miss about that, the whole like phase of just कि बस इवेंट कराना है, ये करना है, मेहनत, स्ट्रगल एंड एवरीथिंग. तो कभी ऐसा हुआ मरियम के फॉर एग्जांपल एक अपने बारे में एक ओपिनियन होता है कि ठीक है मेरी एक कैपेसिटी है और मैं इतना ही कुछ कर सकती हूँ, बट यू समटाइम्स यू गेट वेरी सरप्राइज, अच्छा मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं ये भी मैंने कर लिया. कुछ ऐसा हुआ कभी ज़िंदगी में? यस. मुझे ऐसा लगता था कि मैं अगर मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें एक साथ आएंगी ना एक टाइम पे, तो आई कैन नॉट मैनेज इट. ठीक है. तो बट नाउ विद टाइम आई एम लर्निंग हाउ टू मैनेज थिंग, हाउ टू बैलेंस टाइम. ठीक है. इट्स लाइक आई फील लाइक इट्स नॉट समथिंग लाइक दैट कि आप नहीं कर सकते, कर तो आप सब कुछ सकते हो, बट आपको पता होना चाहिए कि किस टाइम आप क्या कर सकते हो. ठीक है. तो टाइम मैनेजमेंट वाली चीज़, इफ़ यू नो हाउ टू डू दैट, आई कैन से एवरीबडी कैन डू एनीथिंग. सो 4th सेमेस्टर भी गुजर जाता है, 2 साल हो जाते हैं, 3 साल भी हो जाते हैं. लास्ट ईयर में मतलब 8th सेमेस्टर में जब आ जाती है मरियम,
तो मरियम का थॉट प्रोसेस क्या था? उसने कहीं जॉब शुरू कर दी थी या जॉब करने लगी थी या ढूंढ रही थी उस वक्त? क्या कर रही थी उस वक्त? उस वक्त तो आई वॉज नॉट लाइक इनिशियली डूइंग एनीथिंग, हम्म। क्योंकि लास्ट ईयर था तो मुझे था कि मुझे दोस्तों के साथ एंजॉय करनी Okay. है सारी चीज़ें. अच्छा, एवरी स्टूडेंट्स कमिंग इन सेइंग दैट, मतलब इवन के It's like अरीबा आई थी, शी सेड द memories, सेम. like memories, like ठीक you है. make memories there. मतलब कुछ मिस ना हो रहे हो इनके साथ, नहीं आप लेफ्ट आउट भी फील ना करो, फोमो हो रहा हो घर बैठ के कि यार ये लोग तो ये कर रहे हैं and I was not there. It's like I was like I have to enjoy, this is my last year doing all the things जो शुरू में नहीं की यूनिवर्सिटी में, वो अभी हम सब करेंगे. So it was like going out with my friends and जो events हो रहे हैं हम उसमें कर रहे हैं participate. इस तरह से जितनी भी सारी चीज़ें, like going into that. ठीक है. So I just did that also, and like character day वाली चीज़ें ये सारी, so I was like all into that कि इसमें ये भी करना है वो भी करना है, तो like कुछ छोड़ा नहीं मैंने, मुझे ऐसा लगता है कि सब तो वो किया. नहीं, जॉब या करियर का नहीं सोच रही थी उस वक्त कहाँ करनी है? यू आर नॉट अप्लाइंग या क्या क्या वो था? मैंने किया 8th सेमेस्टर में, मैंने कहा चलो अब जब सब हो गया है तो अब कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ना. So then I like when I was in my like last year I started working that, and it's like ठीक है. almost now 2 years I'm working, so I can say that like I'm like very happy what's like throughout है. my journey that's Okay. happening. And even I remember जब मैंने start किया था तो emails जो होती हैं that university send you कि ये internships हैं या ये है, so I got that like first from there. ठीक तो है. मुझे वहाँ से मिली, तो आई वांट से कि वो चीज़ चेक करनी चाहिए. मुझे पहले लगता था यार बस ऐसे ही भेज देते हैं ईमेल, कुछ ये करते तो कुछ नहीं है या कोई रिप्लाई नहीं आता होगा, बट नाउ आई एम लाइक यार होती है चीज़ें, ठीक है. आती हैं काम. तो मैं वैसे भी रैंडमली कभी देख रही होती हूँ, मैं दोस्तों को भेज देती हूँ कि इधर इंटर्नशिप आई हुई है या ये चीज़ है, जस्ट अप्लाई दैट. Why did you decided to do your MBA from here? What's the reason? आई कैन से दैट जल्दी हो रहा था. ठीक है. Not kidding. One of the reason. But it's like I know the faculties, I know the environment, and I know like my like flexibility also. Okay, ठीक है. I'm adaptable to this environment, and मेरी flexibilities जो भी हैं बन रही थी, and some like main thing is that like it's on weekend, ठीक like है. I can balance like my work life and like study ठीक है. साथ साथ. तुम्हारी लाइफ से अगर IoBM को निकाल दें तो where do you see yourself? I'm like कि मैं अभी भी कॉलेज में ही सोच रही थी कि IoBM का ऑप्शन नहीं है तो मैं कहाँ जा सकती हूँ या क्या नहीं. मे बी मेरी पर्सनैलिटी उस तरह से नहीं होती जिस तरह से अभी है, ठीक है. क्योंकि इट डिपेंड्स. यार मैं किसी और यूनिवर्सिटी में होती लाइक इन एवरेज यूनिवर्सिटी और समथिंग लाइक दैट, पर मेरी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं होती. मे बी आई एम लाइक इंट्रोवर्ट ओके. इस तरीके से, लाइक इट्स लाइक आई कैन नॉट से दैट आई कैन इमेजिन IoBM वाली चीज़ नॉट इन माई लाइफ. It's important. ठीक है. Like the past, it's 6 years now since I'm in IoBM, so like these 6 years are very precious to me. ठीक है. कुछ ना कुछ तो सीखा ही है मैंने हर साल में. It's like पहले मैं बोलती थी जब मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगी कौन याद करेगा यूनिवर्सिटी को, मैं तो याद नहीं करूंगी, but now I'm like यार वो चीज़ें हिट कर रही होती हैं आपको. लाइक यू ग्रो अप, यू आर लाइक वी यूज्ड टू डू दिस, एंड इवन हम अपने लाइक जूनियर्स को देख रहे होते हैं ये कर यार ये तो हम भी करते थे, ये तो ये कर रहे हैं, इनको तो इस तरीके से नहीं पता करना था, ये करना था. This happens with everybody. तो ये चीज़ है कि लाइक आई कैन नॉट से दैट कि आई कैन इमेजिन कि IoBM नहीं होता तो क्या होता, बट इट्स लाइक देयर आर सो मेनी मेमोरीज फ्रॉम हियर दैट आई कैन नॉट लाइक कि से कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है. ठीक है. इवन इफ आई ग्रेजुएट फ्रॉम हियर, सो दे लाइक समथिंग दैट्स स्टिल आई फील लाइक this place is very important. Okay. So tell me one of your best memories from here. I can say character day. So what exactly? Tell me ना what happened या क्या था. पहले तो ये बताएं कैरेक्टर कौन सा बनी थी आप? Nobody could even imagine कि ये Okay. मरियम ये कैरेक्टर बनेगी. मैं छोटा पंडित बनी थी. Okay. Like exactly like that. Do send me the photos, I can post it here. Like exactly like that. मतलब सब डिसाइड कर रहे हैं ये, अब मुझे होता था कुछ नया करना है, नॉट लाइक रैंडम सब या कुछ बेसिक सा कुछ नहीं, एक्स्ट्रा करना है कुछ. छोटा पंडित बनी थी. And उसमें भी जब मैं आई सब मुझे बोले ये तुम तो नहीं हो, ये मरियम ये तुम हो, ये इस तरीके का. तो इट वाज लाइक वेरी फनी थिंग. और मैं उस पर हम पूरा यूनिवर्सिटी, मैंने क्लास भी ली थी, क्लास तो स्किप नहीं कर सकती थी ना मैं. मेरी बिजनेस एंड स्पीच की क्लास थी, मैंने और मेरी दोस्त शिजा, हम दोनों ने बैठ के क्लास ली. वो वंडर वुमन बनी है एंड आई एम लाइक नो शी वाज लाइक हार्ले क्वीन या, एंड मैं छोटा पंडित. हम दोनों साथ ही घूम रहे होते थे ना, हम लोग साथ जाके क्लास भी ले रहे हैं. शीज़ लाइक मरियम सब हमें देख रहे हैं, सब बच्चे देख रहे. मैंने कहा शीज़ो चुप करके बैठ जाओ. हम लोग आगे बैठे हैं ना, और टीचर भी मिस लुपना पढ़ाती थी, वो भी हम लोग को देख रहे हैं कि इन लोग को आज क्या हो गया है. इट्स लाइक यू हैव टू बी इन योर अटायर प्रोफेशनली, क्योंकि बिजनेस स्पीच में तो ड्रेस कोड मैटर्स अ लॉट.
I'm like शिजा क्या कर रही है वो. तो I like it was like कि मेरा last year सबसे memorable as well as like I had very good friends in the end, like my EPS friends and like my other friends. So it was like I just enjoyed with them and made memories. जो रहते मैं पूरी क्लास में मैं और शिजा हंसते रहते थे. We just see each other and we just start laughing. Okay. कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं. Be a teacher like आप क्यों हंस रहे हैं? कुछ नहीं, बस laugh. Like if you are like surrounded by few people, you feel like this is something nice going around. So I can say like I made really good friends in like my last semester. Okay, but that's one of the best memory you have. Okay. If I ask your mother to define Mariam, आपको क्या लगता है वो क्या कहेंगी? कोई काम ठीक से नहीं करती. Okay. Yeah, I think like Why? mothers have What's the very reason? selective words in their dictionary that they're gonna implement. कि even if you do everything, they're like नहीं तुमने ठीक से नहीं किया. I'm like आप जिस तरीके से करती हैं I cannot do in that way, but at least मैंने किया तो है ना. हाँ तो आधे अधूरे काम का क्या फ़ायदा. Just appreciate. If you're listening, auntie, this is what she's saying. Just appreciate कि ठीक है मामा इस लाइक नहीं ये सही नहीं किया, इसको इस तरीके से होना चाहिए. But other than that, like she's very concerned about me. खाना खा लेना, ये कर लेना and everything. I'm like I think every mother is like that. Yeah. वो डांटेंगी भी आपको, but like and then if someone else is saying you anything, they'll fight for you. कि क्यों कहा क्यों उसको नहीं नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है. फौरन से अपनी statement change कर देंगे. नहीं they are all nice, इस तरीके से तो कुछ भी नहीं था. Okay. So, Mariam, imagine yourself कि आज से 10 साल बाद you're in a position or anything, but you're in a confused or something, you need some kind of guidance, you some kind of, advice. So, if you want to give advice to yourself, अगर for example अचानक से याद आता है यार 10 साल पहले वो मैंने स्टूडेंट लाउंज में जाके पॉडकास्ट किया तो मैंने अपने एडवाइस दी थी एंड यू ओपनिंग द यूट्यूब एंड सी, तो वो एडवाइस क्या होगी? इस कैमरे में देख के अगर आप कहते हो तो एडवाइस क्या देना चाहोगे अपने आप को, फ्यूचर सेल्फ को? I guess I'm gonna say कि just remember from where you started and how you started. So if you didn't lose your motivation from where you started, so you should keep going on. So I'll say that to myself. Because like you should always remember कि आपने शुरू कैसे किया था and क्या वजूहात थी आपके आसपास में. That's a very wonderful advice. So that is like कि भी आपको पता होता है कि किस तरीके से किया था, तो you just keep going on क्योंकि आपको अपनी मेहनत पता होती है कि I just did by this, I did this and इस तरीके से. So I can say that कि बस याद होना चाहिए मुझे कि मैंने किस तरीके से शुरू किया था and I should be like in that way. You know, like things that matter a lot. Even मेरे पूरे खानदान में they're like इतना पढ़ती, मेरी cousins भी मुझे बोल रही यार बस कर दो और कितना पढ़ोगी तो. I was like अभी MBA हो जाए फिर देखो decide करूँगी कि आगे क्या PhD. Like maybe CSS. Okay. So this is like like my family also wants me to do that. So I'm like maybe I can try that. They're like always कि try कर लो, नहीं होता तो it's fine. हाँ सही है. I think that's a good advice. Either I'll be doing CSS or I'll be working like the way I am. Or I can say I'll be teaching too. Okay. शौक है पढ़ाने का, like so I can do that too. That's like, good. Like when my MBA will be completed on weekend, I can You're teach. eligible for teaching then. Yeah. You know that you need masters for teaching. I separately have to do that. It's like a 16 or 17 years of education you need that. There's a policy from HEC that you need to be at least masters. उसके बगैर नहीं पढ़ा सकते आप. चलिए आप पढ़ा लूँगे. अब now you can teach. मतलब I'll be like the teacher, the way teachers did to me. पर मैंने कहा नहीं, फिर वही उन बेचारे बच्चों को क्या गलती है? जो मेरे साथ हुआ मैं दूसरों के साथ नहीं करूँगी. You getting A's and everything. You're saying कि क्या गलत हुआ? नहीं yes, I'm just kidding. कुछ गलत नहीं हुआ. Like I think like if I'll compare myself with others, so I'm like alhamdulillah I was very grateful in all like from like even parents के side से, दोस्तों के side से, from university as well, like everything. So I'll be like गलत कुछ नहीं हुआ, everything went like very nice. Future plans क्या है मरियम? क्या करना है? I know CSS तुमने बता दिया, लेकिन let's talk about कि अभी जो कर रही हो इसी में pursue करोगी आगे? मतलब for example now you're working for the agency, right? You told me. तो आगे क्या ब्रांड जाना है या कॉर्पोरेट में जाना है, कहाँ जाना है? I guess I'll go brand side like after some times, but like I'm working in a media agency, so that is like more exciting, fun, challenging वाली चीज़. So I'll be pursuing that. Either I'll go brand side or I'll pursue that. ठीक है. So just to be like
just going on with the flow. So I'll pursue, like I'll be doing that. ठीक है. तो अभी तूने बीच में बात की थी, बिजनेस की बात की थी, जो स्मॉल बिजनेसेस एंड Yeah. ऑल, तो कभी सोचती हो कि मरियम डूइंग बिजनेस? स्टार्ट करती हूँ बट मुझे लगता है वो चल नहीं पाता है. जैसे मैंने कोविड में जो थ्रिफ्ट स्टोर्स वगैरह थे वो yeah. किया था. एंड स्मॉल बिजनेस में भी एक कुकीज़ का पेज एंड इस टाइप की चीज़ें की सही थी. है. सो आई फील लाइक वो बहुत मेहनत होती है एंड ग्रोथ का रेट इज़ लाइक वेरी स्लो. ऐसे ही होता है, वेरी स्लो. वो तो हर बिजनेस में ऐसे ही है. तो या मुझे है कि साइड एज अ साइड बिजनेस आई कैन डू समथिंग, बट लाइक मेनली ना आई लाइक आई कैन नॉट. आई नीड दैट लाइक इन्वायरमेंट एंड एवरीथिंग टू वर्क. ये सारी चीज़ें बट मे बी लाइक in like near future I can do as a part-time thing. ठीक है. But I'll planning to just be a corporate girly. अब्रॉड गई थी इंटर्नशिप पे या नहीं, एक्सचेंज पे? I was supposed to go, but then like my parents were like, just stay with us. ओके. Since my brother is already starting in Turkey, so they were like, at least you should stay with us. ठीक है. तो क्या प्लान था, टर्की जाने का प्लान था? Yup. I was Okay. like even planning to do my masters from there, but then I was like, it's okay, I can do from like IoBM. ठीक है. So I did that. तो आगे प्लान है कोई दिमाग में ऐसी चीज़ है जैसे फॉर एग्जांपल एक और मास्टर्स करती हो या पीएचडी करती हो, तो क्या बाहर से करोगी, यहीं से करोगे? I'll think about that. Maybe बाहर से यहाँ पे I'll just explore the opportunities उस time कौन सी ज़्यादा feasible है. ठीक है. Then I'll decide. थैंक यू सो मच मरियम, इट वाज अ वंडरफुल टॉकिंग टू यू. आई होप जो तुम कर रही हो, जो तुम करना चाहती हो, वो कर लो अपनी ज़िंदगी में, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड ऑल द सक्सेस. Thank you for coming on the show. Thank you so much for like inviting me and having me. It's like I enjoyed the show. Like मतलब नहीं चला इतने जल्दी टाइम गुजर गया, but like I really enjoyed it. Okay, thank you. So guys, this was Mariam, MBA student. आपने उनके बारे में सुना, उन्होंने बताया अपनी लाइफ के बारे में, उनकी चीज़ों के बारे में. If you think you have the good stories and all, so we have created a Google form. Link is in the description. You can fill it out, and if we think your story is interesting, so we will definitely gonna call you on the show. Until then, this is your host Shayan Hussain, and you're watching Student Lounge. Signing off. Allah Hafiz.